गुड इवनिंग एवरीवन। हमें स्टार्ट करिवा डीसी जनरेटर 300 एमसीक्यू जाइथिला। नेक्स्ट देखिबा मो वॉइस क्लियर सुबुची। 300 नंबर क्वेश्चन पर देखिबा। 300 in over compound generator full load terminal voltage is dash। से कहला ओवर कंपाउंड जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज कौन हबो? ऑप्शन ए इक्वल टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन बी मोर देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन सी लेस देन, ऑप्शन डी ऑलमोस्ट जीरो। यार ऑप्शन कौन हबो ना मोर देन नो लोड करंट टर्मिनल वोल्टेज। 301 the process by which an EMF induced in a DC generator is known as dash method। से कहला EMF induced हबो DC generator रे को मेथड रे ना डायनामिक मेथड। नेक्स्ट जीवा to get sinusoidal wave shape of an alternating current dash। ऑप्शन ए coil should rotate under uniform field, ऑप्शन बी कहला coil should rotate under more number of poles, ऑप्शन सी two slip ring must be used, ऑप्शन डी armature should have more number of coils। यार ऑप्शन कौन हबो ना ऑप्शन ए coil should rotate under uniform field। नेक्स्ट जीवा ना कार किसी डाउट अछि कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। 303 is a DC generator if the field circuit resistance is more then field critical resistance than the dash। से कहला DC generator field circuit resistance यदि अधिक होला ताहाले field critical resistance कौन हबो? ऑप्शन ए कहला field coil will be burn, field coil कौन जली जीवो, ऑप्शन बी कहला generator will build up maximum voltage, ऑप्शन सी कहला generator will generate of maximum power, ऑप्शन डी कहला generator will not build up voltage, ऑप्शन होची generator will not build up of voltage। 304 a 4-pole 1500 rpm DC generator has a lap wound armature having 24 slot with 10 conductor per slot। If the flux per pole is 0.04 Weber, then EMF generator in the armature is dash। से कौन कौन डाटा देछि ना 4 पोल देछि, आरपीएम देछि केते 1500 आरपीएम आउ लैप उंड देछि, आर्मेचर हैविंग स्लॉट केते 24 टा स्लॉट देछि, कंडक्टर 10 टा कंडक्टर देछि आउ फ्लक्स पर पोल होछि 0.04 और ईएमएफ जनरेटर पचरछि। प्रथम हम इजी कैलकुलेट करिया पई फार्मूला कोन ना P5Zn/60A। हमें z होछि केते z जदि बाहर करिया पई हबो ना z होछि केतरा कंडक्टर, z होछि केतरा स्लॉट आ केतरा कंडक्टर, z इक्वल कोन ना स्लॉट इनटू कंडक्टर 24 into 10 होछि 240, z होछि 240, फ्लक्स होछि 0.04 और स्पीड होछि 1500 और डिवाइड बाय 60 एटा होछि केते ना 240 वोल्ट। एमता क्वेश्चन हमें करबा कोई एडिट बनी। नेक्स्ट जीवा 305 नंबर क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स द मटेरियल प्रिफर्ड फॉर पोल शू ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट इज डैश। से कहला इलेक्ट्रिकल मशीन रे मटेरियल प्रिफर्ड कोछि पोल शू को मटेरियल प्रिफर्ड कोछि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कोन ना ऑप्शन ए कहला प्योर आयरन, ऑप्शन बी कहला एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कहला कॉपर, ऑप्शन डी कहला लीड। हमें को आयरन को थर प्रिफर करछु को मटेरियल प्रिफर करछु ना प्योर आयरन। नेक्स्ट जीवा 306 आयरन लॉसेस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। से कहला आयरन लॉसेस होछि डीसी मशीन ने इंडिपेंडेंट का से होछि वेरिएशन। ऑप्शन ए कहला स्पीड सहित, ऑप्शन बी कहला लोड सहित, ऑप्शन सी कहला वोल्टेज सहित, ऑप्शन डी कहला स्पीड एंड वोल्टेज। वेरिएशन का से होछि इंडिपेंडेंट मशीन लॉस आयरन लॉस ना लोड सहित। 307 नंबर क्वेश्चन ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसीडर एज ए। से कहला डीसी जनरेटर का से कंसीडर करछि, ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी प्राइम मूवर, ऑप्शन सी रोटेटिंग एम्पलीफायर, ऑप्शन डी पावर पंप।
एटा का सहित कंसीडर करछि डीसी जनरेटर ना रोटेटिंग एम्पलीफायर। For DC generator, lap winding is a suitable option for से कहला DC generator lap winding is suitable को ऑप्शन suitable करछि lap winding हमें जानि छु lap winding माने हाई करंट लो वोल्टेज ऑप्शन होछि ए। एंता क्वेश्चन भी करबा प्रॉब्लम नेक्स्ट जिबा 310 नंबर क्वेश्चन द प्राइमरी रीजन ऑफ providing compensating winding in a DC generator is to dash से कहला the primary reason for providing compensating winding in a DC generator is to dash ऑप्शन ए कहला compensated for a decrease in main flux को डिक्रीज करिवो compensate ऑप्शन बी कहला न्यूट्रलाइजर armature mmf magnetic motive force option C कहला neutralize cross magnetic flux option D कहला maintain uniform flux distribution यार करेक्ट आंसर होची कोन ना न्यूट्रलाइज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जिबे 311 in a 250 volt DC machine sound field resistance is found to be 500 ohms the sound field current will be dash से कहला जदी वोल्टेज देइछि 250 वोल्ट डीसी मशीन रे साउंड फील्ड रेजिस्टेंस देइछि 500 ओम आ पचारि साउंड फील्ड करंट केते हमें जानजु साउंड फील्ड रेजिस्टेंस करंट होजी आईएसएस इक्वल टू V बाय आरएसएच V होजी केते ना 250 डिवाइड बाय आरएसएच केते देइछि ना साउंड फील्ड रेजिस्टेंस ना 500 केते हो ना 1/2 कोन हो ना 0.05 एम्पियर माने करंट आंसर कोड अछि ना ऑप्शन डी नेक्स्ट जिबा 312 नंबर the current in the armature of DC shunt generator can be determined by the formula से कहला current रो formula हो DC shunt generator determine केंति करिवा ना V - E divided by RA ऑप्शन बी कहला EB by RA ऑप्शन सी कहला IL plus ISH ऑप्शन डी कहला IL minus ISH हमें जानि छु करंट रो फार्मूला कोन हबो ना एडी जदी एटा करंट फ्लो होजी लोड केते जाउची आ सोर्स केते जाउची आडू केते आछी आईएस केते करंट आउची आ आईएल केते करंट जाउची तमे कोन आई इज इक्वल टू आईएल टोटल करंट कोन आईएल प्लस आईएसएच ऑप्शन होजी सी जिबा द इलेक्ट्रिक degree are equal to 360 degree multiplied by the से कहला तो इलेक्ट्रिक डिग्री आर इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई आर तो कौन हबो ऑप्शन ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑप्शन बी नंबर ऑफ बर्स ऑप्शन सी नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स ऑप्शन डी नंबर ऑफ पोल्स देखिए ऑप्शन कौन कहिछि ना ऑप्शन सी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल्स थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p5 टू थीटा मैकेनिकल एटा भी गोटा फार्मूला रहउछि देखो the electrical degree are equal to 360 multiplied by the number of pairs of poles मैं इट कहितली थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p बाय माने पोल बाय डिवाइडेड बाय 2 इनटू थीटा मैकेनिकल ए फार्मूला भी पढुछि बेले बेले 314 नंबर क्वेश्चन फॉर ए डीसी जनरेटर if constant loss are equal to variable loss तो efficiency of the generator will be dash से कहला डीसी जनरेटर रे constant loss इक्वल होची वेरिएबल लॉस रे तो एफिशिएंसी जनरेटर केते ऑप्शन ए कहला 80% ऑप्शन बी कहला 90% ऑप्शन सी कहला मैक्सिमम ऑप्शन डी कहला मिनिमम एला करेक्ट आंसर होची मैक्सिमम हमें जानि छु वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हेले सेटा होची मैक्सिमम होबो एफिशिएंसी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जिबा नेक्स्ट 315 नंबर क्वेश्चन इन लार्ज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज से कहला जदी बड़ जनरेटर थिबो जनरेटर हाइड्रोजन इज कोन हबो ए कंडक्टिंग मीडियम बी इंसुलेटिंग मीडियम सी इंसुलेटिंग एंड कूलिंग मीडियम ऑप्शन डी कहला कंडक्टिंग एंड कूलिंग मीडियम एटा कोन हबो ना इंसुलेटिंग एंड कूलिंग मीडियम नेक्स्ट जिबा
316 तार किसी डाउट अछि यदि पचार तार किसी डाउट अछि 316 in a DC generator brush shift is done to से कहला जेतो DC generator brush shifting होजी कोन होजी ना ऑप्शन ए alter the interpole flux, B alter the main field flux, option C neutralize the cross magnetism effect, option D neutralize the demagnetism effect. ब्रश शिफ्टिंग बोले कौन होची ना न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटिजिंग इफेक्ट ऑप्शन होची यार सी नेक्स्ट जिबा 317 number question. In a DC machine, the armature copper loss are approximately of the total full load losses. कौन हबो ना 10% 15% 20% to 30% ऑप्शन डी कहला 25% ऑप्शन ई कहला 30% to 40%. এটা very very important question. ए डीसी मशीन रो कॉपर लॉस एब्सोल्युटली केते होची ना 30% to 40%. এটা রিপিট क्वेश्चन होची प्रति वर्ष. तापर नेक्स्ट जिबा 319 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ डीसी मशीन मेजर्ड बाय डैश. से कहला डीसी मशीन की मेजर करबा का द्वारा ऑप्शन ए कहला वोल्टमीटर द्वारा. वोल्टमीटर हम कोन वोल्टेज मेजर करछि एटा केबे हला हबनी. ऑप्शन बी कहला एमीटर एटा तो करंट मेजर करछि. ऑप्शन सी कहला टैकोमीटर. ऑप्शन डी कहला मल्टीमीटर. ऑप्शन ई कहला पैरोमीटर. एटा कोन हबो स्पीड मेजर करिया में डीसी मशीन रो हम कोन मेजरमेंट करछु ना टैकोमीटर. जिबा नेक्स्ट से कहला ए 4-pole DC generator runs at 1500 rpm. The frequency of current in armature winding is से कौन गिवन देछि डाटा पोल देछि चारिटा पोल चारटा देछि तार स्पीड दे देला केते ना 1500 rpm. द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग हमें एनएस फ्रीक्वेंसी बाहर करिया पई फार्मूला कोन प्रथम हम फ्रीक्वेंसी बाहर करे हले कोन स्पीड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 120 f by p आउ ए एफ टा पळे आसले एपुटको तर कोन हबो ना एनपी क्रॉस मल्टीप्लाई हबो डिवाइड बाय 120 आ पी केतरा देछि ना 4 फ्रीक्वेंसी सेटा केते ना 50 हर्ट्ज केते ना 50 हर्ट्ज. एमते क्वेश्चन करिवा कोरी डबनी 321 नंबर क्वेश्चन. कार किछि डाउट अछि कमेंट करो. If the series flux is in the same direction as the shunt, then what type of motor is called? से कहला series flux in the same direction of the shunt. Series flux same direction अछि shunt माने shunt field flux होइता. Then what type of motor is called? ऑप्शन ए कहला cumulative compound, ऑप्शन बी कहला differential compound, ऑप्शन सी कहला linear compound, ऑप्शन डी कहला internal compound, ऑप्शन ई कहला practically compound. ये तीनटा तो बेहले ऑप्शन रे हबन. एमते कंपाउंड तो कभी केबे सुनि न थबे गला ऑप्शन हमें एथरो काटी देलु. तो चला क्युमुलेटिव कंपाउंड हे पारे न हले डिफरेंशियल कंपाउंड हे पारे. डिफरेंशियल कंपाउंड रो कोन हबो ना नेट फ्लक्स हबो 5ss माइनस 5ss SI माने सीरीज फ्लक्स साउंड फ्लिप फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स होइतांता. डिफरेंशियल माने माइनस होइतांता आ क्युमुलेटिव माने प्लस होइतांता. एटा कोन हबो ना ऐड हो जेतले सेम डायरेक्शन माने कोन ऐड होजी ता माने ऑप्शन नंबर होजी करेक्ट. नेक्स्ट जिबा what does the number of magnetic stator poles refer to dash. से कहला what does the number of magnetic stator poles refer to dash. ऑप्शन ए कहला the number of power or load constant. ऑप्शन बी कहला number of contact. ऑप्शन सी कहला number of north poles. ऑप्शन डी कहला number of south poles. ऑप्शन ई कहला all of these above. कौन हबो नंबर ऑफ मैग्नेटिक स्टार्टर पोल्स रिफर टू कौन हबो ना नंबर ऑफ पावर और लोड कांटेक्ट. नेक्स्ट जिबा तार किछि डाउट अछि 323 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए स्टार्टर. से कहला इलेक्ट्रिकल डिग्री स्टार्टर रे केते. ऑप्शन ए कहला 120 डिग्री इनटू नंबर ऑफ पोल्स. ऑप्शन बी कहला 360 डिग्री
into number of poles. Option C कला 270 degree into number of poles. Option D कला 720 degree into number of poles. Option E कला 90 degree into number of poles. ଆମେ ଜାଣିଛୁ यार फॉर्मूला होची थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p by 2 into थीटा मेकानिकल। तामाने जदि पोल को जदि मु आर फॉर्मूला है जीव थीटा 180 डिग्री इनटू नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन होची ए। एंता प्रॉब्लम करिवा एंता डेरिवेशन करी प्रॉब्लम करिया सेतरे मु कलिनी व्यस्त होंतन की 324 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द कम्यूटेटर ऑफ डीसी जनरेटर। से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द कम्यूटेटर ऑफ डीसी जनरेटर। ऑप्शन ए कहला आयोडाइन। ऑप्शन बी कहला कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन सी कहला गैस लाइन मिक्स्ड विथ ऑयल। ऑप्शन डी कहला किरोसिन। ऑप्शन ई कहला ऑल ऑफ दिस अबव। कोटा क्लीनिंग में करूछु हम कम्यूटेटर रो ना कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट जीवा 326 नंबर क्वेश्चन इन ए डीसी मशीन द शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश। से कहला डीसी मशीन इन ए डीसी मशीन द शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश। केमती कोन डिस्ट्रीब्यूशन होची। ऑप्शन ए कहला ट्रायंगुलर शेप रे डिस्ट्रीब्यूशन होची। ऑप्शन बी कहला ट्रापेजोइडल। ऑप्शन सी कहला सैडल साइज। ऑप्शन डी कहला फ्लैट टैप्ड। ऑप्शन डी कहला पैराबोलिक। हमें जानी जो डीसी मशीन ना शेप ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन केन थबो ना ट्रापेजोइडल। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन ए डीसी मशीन इज डैश। पोल शूज केमती। ऑप्शन ए कहला सपोर्टिंग द फील्ड कॉइल्स। ऑप्शन एटा तो फील्ड कॉइल सपोर्ट करची पोल शूज हमें जानी जो। ऑप्शन ए भी ठीक अछि। ऑप्शन बी separate out the flux to achieve uniform flux distribution in the air gap। हाँ separate out the flux to achieve करूची आ uniform flux provide करची distribution करची air gap में। ऑप्शन बी भी करेक्ट। ऑप्शन सी कला both A and B। हाँ both A and B करेक्ट अछि। ऑप्शन डी देखिबा to provide mechanical strength to the combination ना mechanical strength को combination करची। ऑप्शन ई कला to reduce eddy current loss। हाँ पोल एडी करंट लॉस रिड्यूस करिवो एंड करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ठीक अछि। 328 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग कंपेयर्ड टू सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग। से कहला रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग कंपेयर करिवो सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन ए कहला कोन ना मोर देन सीरीज वाइंडिंग। ऑप्शन बी कहला मोर देन आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन सी कहला लेस देन सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन D कहला more than series and armature winding। ऑप्शन E कहला twice the armature winding। कौन हबो ना resistance shunt winding compared to series and armature winding कौन हबो ना more than series and armature winding। ऑप्शन D हो सेना करेक्ट आंसर। इंदा क्वेश्चन करिवा 330 नंबर क्वेश्चन कौन कहला the insulating material is used to between the commutator segment is dash। से कहला insulating material कम्यूटेटर सेगमेंट रे कोन हम व्यवहार करछु। ऑप्शन ए कहला वार्निश। ऑप्शन बी कहला माइका। ऑप्शन सी कहला एम्पायर क्लॉथ। ऑप्शन डी कहला फिल्म पेपर। ऑप्शन ई कहला प्लास्टिक। हमें जानि छु इंसुलेटर कोन व्यवहार करछु ना माइका। नेक्स्ट जीवा 331 नंबर क्वेश्चन as the speed of the generator increases the induced voltage will be dash। से कहला यदि जनरेटर स्पीड इंक्रीज होउची ताले इंड्यूस्ड वोल्टेज कोन हबो। ऑप्शन ए कहला इंक्रीज हबो। ऑप्शन बी कहला डिक्रीज हबो। ऑप्शन सी कहला रिमेन सेम हबो। ऑप्शन डी कहला जीरो हबो। ऑप्शन ई कहला वेरी हाई हबो। हमें जानि जो स्पीड डा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज रो इजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देखो इजीटा देखो इजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्पीड सहित पोल सहित फ्लक्स सहित आउ नंबर ऑफ कंडक्टर सहित। इनवर्स प्रोपोर्शनल इजी का सहित अछि ना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सहित। जदि मते पचार थंदा इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सहित अछि ना स्पीड सहित अछि पोल सहित अछि फ्लक्स सहित अछि आउ नंबर ऑफ कंडक्टर सहित अछि। एटा होछि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल पचार थिले ना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सहित। मोर एटा कोन हबो जदि इजी बढ़िला
ताले इंड्यूस्ड ईएमएफ जदी बढ़ला ताले स्पीड बढ़ियो सी प्रथम कोन होची स्पीड ऑफ द जनरेटर इज इंक्रीज जदी स्पीड मोर इंक्रीज होला ताले इजी भी मोर इंक्रीज होबो ताले ऑप्शन होची एरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट जीवा 332 नंबर क्वेश्चन which generator can amplify the voltage even if there is no residual magnetism से कहला which generator can amplify the voltage even if there is no residual magnetism ऑप्शन ए कहला सीरीज जनरेटर ऑप्शन बी कहला शंट जनरेटर ऑप्शन सी कहला कंपाउंड जनरेटर ऑप्शन डी कहला सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ऑप्शन ई कहला ऑल ऑफ दिस एबव हमें जानिचु रेसिडुअल मैग्नेट कोड थबो ना सीरीज रे शंट रे कंपाउंड रे आ रेसिडुअल मैग्नेट जदी नथिबो कोठे पचारजी मोटे जीवन ना हमें सेपरेट रे हमें रेसिडुअल फ्लक्स यूज करछु एडी देखो सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैन बी एम्प्लीफाइड द वोल्टेज इवन इफ द इज नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नेबे रेसिडुअल मैग्नेट जतरे यूज करू ना ही तो नेम एम्प्लीफाई द फील्ड कॉल इज इनराइज्ड बाय सेपरेट डीसी सोर्स हमें ताको सेपरेट डीसी सोर्स द्वारा आको हमें यूज करू नेक्स्ट जीवा 333 नंबर क्वेश्चन an EMF is induced in the armature winding of a DC generator when the armature rotates in dash segala EMF induced in the armature winding of a DC generator when the armature rotates in dash option A कहला electromagnetic flux option B कहला electrostatic field option C कहला magnetizing field option D कहला alternating field option E कहला synchronous speed कौन हबो ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड नेक्स्ट जीवा 334 नंबर क्वेश्चन द वेंटिलेटिंग डक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द डीसी मशीन आर डैश ऑप्शन ए कहला रेडियल ऑप्शन बी कहला लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्शन सी कहला रेडियल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्शन डी कहला पैरेलल ऑप्शन ई कहला नॉन ऑफ दिस एबव हमें जानि छु वेंटिलेटिंग डक्ट्स ऑफ मोस्ट डीसी मशीन आर कोन हबो ना रेडियल एज वेल एज आइकन longitudinal रेसिडुअल एज वेल एज longitudinal जीवा नेक्स्ट 335 नंबर क्वेश्चन द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन इज कॉल्ड रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन कौन कह जाए ना आर्मेचर नेक्स्ट जीवा in a DC generator current is collected through the armature DC generator current collect के करूची ना commutator and brush commutator brush current collect करूची नेक्स्ट जीवा welding generator will have dash welding generator हम कोड व्यवहार करछु ना lap winding ना wave winding ना either A and B ऑप्शन देखिया आ कोन देछि ना ऑप्शन डी होची वे कनेक्टेड वाइंडिंग ना डी ई कहला नॉन ऑफ द एबव हम वेल्डिंग जनरेटर कोटा में कहछु ना लैप वाइंडिंग कोन ना लो वोल्टेज हाई करंट लैप वाइंडिंग यूज हाई करंट आउ लो वोल्टेज ओए वाइंडिंग रे जो सब यूज होची कोन होची ना लो करंट आउ हाई वोल्टेज में नेक्स्ट बार 338 नंबर क्वेश्चन what does the EMF of DC generator depend on dash EMF DC generator depend का सहित करूची ऑप्शन ए कहला कम्यूटेशन सहित ऑप्शन बी कहला स्पीड सहित ऑप्शन सी कहला फ्रीक्वेंसी सहित ऑप्शन डी कहला ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप ऑप्शन ई कहला ऑल ऑफ दिस एबव मु कहिथली EMF इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कोन ना फ्लक्स सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्पीड सहित आउ नंबर ऑफ कंडक्टर सहित आउ पोल सहित एठी कोन देछि पोल तो देइनी फ्लक्स देइनी स्पीड खाली देछि तन्ने स्पीड सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ इनवर्स प्रोपोर्शनल इज का सहित ना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सहित ए सहित नेक्स्ट जीवा 339 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स ऑन डीसी मशीन रिक्वायर्ड एट द लिस्ट two machines dash option A कहला ब्रेक टेस्ट ऑप्शन बी कहला रिटार्डेशन टेस्ट ऑप्शन सी कहला बैक टू बैक टेस्ट ऑप्शन डी कहला स्विनबर्न टेस्ट ऑप्शन ई कहला डायलेक्ट्रिक टेस्ट से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ डीसी मशीन रिक्वायर्ड टू लिस्ट टू मशीन कोन हबो ना बैक टू
test 340 number question. If the magnetic flux generated by the series winding helps the flux generated by the sound field winding, then source generator is called dash. Option A कौन कहला ना commutative compound. Option B कहला differential compound. Option C कहला uncompounded. Option D कहला sorted. Option E कहला integrally compound. ना कौन अपन ना commutative compound. तो देइछि कौन now, if the magnetic flux produced by the series winding helps the flux produced by the sound field winding, then such generator is called cumulative compound. Now, if the magnetic flux produced by the series winding oppose the flux produced by the sound field winding, then the source generator is called differential generator. से कौन कहला differential generator compound का कुआ जाए ଆଉ cumulative compound कौन कुआ जाए मु एडी कहि देली total flux by total flux is equal to sound of flux plus series flux যদি হবো তাহলে এটা হবো cumulative compound আচ্ছা যদি এই টোটাল নেট ফ্লাক্স যদি হইতান্দা ইপসি নেট ফ্লাক্স তাহলে সাউন্ড অফ ফ্লাক্স মাইনাস সিডিজি ফ্লাক্স যদি হইতান্দা তাহলে কোন হইতান্দা না ডিফারেন্সিয়াল ଟିକେ କୋଅପରେଟ କରିବେ ମୁଁ ମାଉସରେ ଲେଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 341 ନମ୍ବର क्वेश्चन the angle between the magnetic neutral axis and the resultant flux is dash से पछला माने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आ रेजल्टेंट फ्लक्स भितरे केते डिग्री एंगल रहउछि ऑप्शन ए कला 30 डिग्री ऑप्शन बी कला 60 डिग्री ऑप्शन सी कला 90 डिग्री ऑप्शन डी कला 45 डिग्री रेजल्टेंस फ्लक्स आ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भितरे केते डिग्री रहउछि ना एंगल ना 90 डिग्री रहउछि एंगल 342 नंबर इन द प्रॉब्लम करिवा 300 The DC generator used for arc welding process is option A कला cumulative compound हमें arc welding process को DC generator करछु option A कला cumulative compound option B कला series compound option C कला under compound option D कला differential compound हम differential compound रे arc welding व्यवहार करछु जीवा 344 number question. Read the following statements and choose the correct answer. Option A कला the dummy coils are placed on a wave wound armature when the ratio of commutator bar and slot is a whole number. Option 2 कहला माने correct statement 2 टा the dummy coils are placed on a wave wound armature when number of coil side per slot per layer is a multiplier of pole pair એટલે કોણ હબો ના 1 હોची करेक्ट हम जान डमी कॉल इज आर प्लेस्ड इन ऑन ए वेव वुंड आर्मेचर एटा करेक्ट ऑप्शन 2 होची फॉल्स एमती देखिया कोटा ऑप्शन 1 करेक्ट अछि ऑप्शन 1 भूल अछि एटा ऑप्शन भूल हबो ऑप्शन 1 एटा the dummy coil of the place in the on a wave wound armature when the ratio of the commutator bar and slot is whole number एटाई भूल अछि ऑप्शन तार मोर कोन हबो ना ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीवा 345 नंबर क्वेश्चन which among the following material is used for making split ring सी कहला को material यूज होची split ring पई ऑप्शन ए कहला wrought iron ऑप्शन बी कहला कॉपर ऑप्शन सी कहला कास्ट आयरन ऑप्शन डी कहला एल्युमिनियम जो स्प्लिट रिंग पे हमें को मटेरियल यूज करछु ना कॉपर जीवा 346 नंबर क्वेश्चन to overcome the losses the power produced by a generator is passed through gas which increase the voltage से कहला overcome the losses the power produced by a generator is passed through the gas which is increase the voltage option A कहला grounding option B कहला polyphase option C कहला step up transformer option D कहला auto एटा कोन हबो ना step up transformer to overcome the losses the power produced by a generator is passed through the step up transformer
which increase the voltage. Our transmission power is higher voltage reduced to losses ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରୁ ନା I square R ରେ losses ବାହାର କରୁ 346 नंबर क्वेश्चन सइला डीसी मोटर डीसी जनरेटर टोटल वाईसीट रो टोटल डीसी जनरेटर सब सरची हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा डीसी मोटर रू स्टार्ट करिबा थैंक यू एवरीवन केमती लागिला हम क्लास टा ଆଉ କାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 342 ନମ୍ବର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ଯେନ୍ତା ରହିଛି ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାପ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ପଢାଯିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର